Dear students, good morning to all of you. Today we will start the remaining questions of exercise 3.3. Okay, up to question number 2, question number 1 and 2 we already finished or discussed in my previous video. So let us start from question number 3 onwards. Okay, so form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. Okay, in this exercise we have to use only substitution method, but suppose same questions, if means same questions will come in your exam, you can solve by using any three of the methods. I will explain in next exercise. Okay, the first method is substitution method. We already learned in this exercise. Okay, if method is not mentioned, then in your exam you can solve by using any method. Okay, but here you have to solve by only substitution method. Here you can see mention here na. Okay, so let us start. The first one, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. Okay, come on, solution part. Let first number be x and another number be y, where y is greater than x. We assume, or you can take x is greater than y. ये हमने समझने के लिए लिख दिया. ओके, so the greater number, we can say one number is 3 times the other, so this is greater. So for equal sign we multiply to x side, x की तरफ हम 3 का multiply करेंगे, then both the numbers will be equal. And when we subtract according to the question, there are two situations given in the question. Okay, the difference between the numbers is 26. So 26 will come when we subtract smaller one from the larger one. इसीलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिख दिया कि y is greater than x. So y minus x equal to 26. Now you get two algebraic equation. Okay, or two linear equations. From equation first, put y is equal to 3x in equation second. Directly you can put the value of y in equation second. In place of y you put 3x minus x is equal to 26, then 2x equal to 26, then x equal to 26 by 2, that means 13. Right? Put x equal to 13 in equation first. Okay, then x equal to 13 in equation first, then y is equal to 3 into 13, that means 39. Hence required numbers are 13 and 39. Now you can see the situation. This number is 3 times this number, means 13 into 3 is equal to 39, and 39 minus 13 is equal to 26. You can see both the conditions verified here or applicable here. Now come on, second part. The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. First of all, we have to know that supplementary. You already know that supplementary means the sum of two angles must be equal to 180 degree. Okay, that is supplementary angle. Second part, let the larger angle be x degree and the smaller angle be y degree. Then according to question, the angles are supplementary. So x plus y is equal to 180 degree and x minus y is equal to 18 degree, because difference is given now. So we can say that the x angle is greater than the y angle. Okay. From equation first, x plus y is equal to 180 degree, then we will transpose the value of y to the right side, then x equal to 180 minus y.
Put x equal to 180 minus y in equation second. Okay. Then 180 minus y in place of x, then minus y is equal to 18 degree. Minus y will be minus 2y, and 180 will transpose to the right side, 18 minus 180. Okay. Minus 2y is equal to minus 162. Minus minus cancel from both sides. Then y is equal to 160 by 2. That means 81. So value of y is equal to 81. Then put y is equal to 81 in equation first. You have to put in equation first. Then x plus 81 is equal to 180. Then x equal to 180 minus 81. Okay. This is 81, not 89, 81. Then what you will get? Then x equal to 99. Okay. So the angles are 81 degree and 99 degree. Now you can check the situation. The sum of these angles 180 degree equal to 180 degree, that means supplementary angles, and the difference between these two angles is equal to 18 degree. So both the condition I think satisfied. So I hope you understand. Okay. Now come on, third part. The coach of a cricket team buy 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buy 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. I think this question means maybe value change, but exactly the question of bat and ball you already done in previous exercises, but there you make the algebraic equations only or solve graphical method only ना. तो उसी तरीके से यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे. देन वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड. Let the cost of one bat be rupees x and the cost of one ball be rupees y. Okay. According to question, 7x plus 6y is equal to 3800, because the cost of 7 bat, that means 7x, 6 ball, that means 6y, and together 3800. Similarly, 3 bat cost 3x, 5 ball cost 5y, and दोनों को मिला करके cost together rupees 1750. Okay. Then from equation first, 7x plus 6y is equal to 3800. Then 6y is equal to 3800 minus 7x. We transpose 7x to the right side. Then y is equal to 3800 minus 7x by 6, because 6 will come to the right side as a division. And put this value in equation second. Okay. Y is equal to 3800 minus 7x by 6, and put this value in equation second. Okay. Then 3x plus 5, 3800 minus 7x by 6. Okay. Is equal to 1750 or 1750. 3x is equal to 9500. 5 will multiply. Okay. And 5 से बन जा 35. ओके. नेक्स्ट, यहां आपने कैंसिल भी किया 2 से, तब ये आया. ओके. ये ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा. 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करवाया, फिर ऊपर नीचे कैंसिल किया गया, और 35x बाई 6 एज इट इज लिख दिया गया. ठीक है. इसलिए क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आई थिंक 19,000 आएगा. यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई करवाएंगे उसका हाफ किया गया, 2 से कैंसिल किया गया. ओके.
देन 3x माइनस ये वाला स्टेप आप करके कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा, यू हैव टू डू योर कैलकुलेशन। ओके, 3x माइनस 35x/6, ओके, और 9500/3 को हम राइट साइड में ले गए, दैट मीन्स 1750 माइनस 9500/3, ओके, टेक एलसीएम 3, हियर टेक एलसीएम 6, 18x माइनस 35x इक्वल टू 50, 250 और 5250 माइनस 9500, ओके, दोनों तरफ से माइनस 17x आएगा और इधर माइनस 4250 माइनस माइनस कैंसिल, ओके, बाई 6/3। देन x इक्वल टू 6 इंटू 4250/3 इंटू 17, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया। फाइनली आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 500। पुट दिस x इक्वल टू 500 इन इक्वेशन थर्ड, यू टेक इन थर्ड इक्वेशन हियर, यू कैन सी, इसको हमने क्या बना लिया था, इक्वेशन थर्ड, और यहाँ पर x की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड यू कैन पुट इन एनी इक्वेशन, ओके, बट इन थर्ड वन ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन इज देयर, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू इजिली, ओके। सो 3800 माइनस 7 इंटू 500/6, 3800, ओके, माइनस 3500, 3500/6 means 300/6 equal to rupees 50. So we can say that therefore the cost of one bat is rupees 500 and one ball rupees 50, ओके, एक बॉल का जो कॉस्ट है रुपीज 50 है, एक बैट का जो कॉस्ट है वो रुपीज 500 है। वर्ड प्रॉब्लम के इसलिए एक लाइन लास्ट में आपको वर्ड्स में जरूर लिखना है। गॉट इट? ओके, सो नाउ कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A fraction becomes 9/11, okay, if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction, okay. There are two conditions given here. If 2 is added to the both, means suppose a fraction is given, if we add 2 in numerator as well as denominator, then we will get 9/11, okay. When 3 is added to both numerator as well as denominator, then we will getting 5/6, okay. So find the fraction. So come on, solution part I will explain. Okay, I done fifth part here, okay, 1 minute. Oh, I read fifth one, na? So I will explain first fifth one, okay, no problem. मैंने पहले फिफ्थ वाला रीड कर दिया, फोर्थ वाला रह गया, उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। फिफ्थ वाला एक्सप्लेन किया तो उसी को, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, सो फ्रैक्शन इज x/y, हमने न्यूमरेटर एज्यूम किया एंड डिनोमिनेटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 2 न्यूमरेटर एंड 2 in denominator, then it becomes 9/11, okay, by using cross multiplication, 11x plus 11 to the 22, 9y plus 9 to the 18, okay, 9y will come to the left side, so 11x minus 9y is equal to 18 minus 22, then finally 11x minus 9y is equal to -4. This is your first equation. Then now if we add both in numerator and denominator,
if we add 3 both numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Cross multiplication, 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. Then 6x plus 5y is equal to 15 minus 18. 6x plus 5y is equal to minus 3. This is your second equation. अब आप फर्स्ट इक्वेशन से चाहे सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए. ओके, देन x इक्वल टू हमने 9y को उधर ले गए, प्लस में गया और 11x था, 11 नीचे आ गया. एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. सो x इज इक्वल टू -4 plus 9y by 11 and put this value in equation second. Okay, so here you can say 6 in bracket -4 plus 9y by 11 minus 5y is equal to -3. Now minus 24 plus 54y minus 55y ओके इज इक्वल टू -3. ये कैसे आया ये स्टेप? हमने 11 का मल्टीप्लाई करवा दिया पूरे में, तो 11 यहाँ से कैंसिल, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33. ठीक है, डिनोमिनेटर हटाने के लिए 11 का मल्टीप्लाई करवा दिया. देन माइनस वाई इक्वल टू माइनस 54y ओ प्लस 54y माइनस 55y, तो माइनस का y बचेगा, -24 इधर प्लस में आ गया, तो -33 प्लस 24. So minus y is equal to -9, then minus cancel. Finally y is equal to 9. Put y in equation थर्ड, जो हमने इक्वेशन थर्ड बनाया था ना उसमें पुट कर देते हैं. Then x equal to -4 plus 9 into 9 by 11. That means 77 by 11, 7. So x equal to 7. So fraction is 7 by 9. So this is your final answer. Got it? I hope you understand. ओके, come on नेक्स्ट पार्ट. मैंने फिफ्थ रीड किया था, अब फोर्थ वाला एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये भी इजी है. द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155 kilometer. What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay to traveling a distance of 25 kilometer? Okay, then come on solution part, I will explain. Let the fixed charge be rupees x, okay, and the charge per kilometer is rupees y. According to question, x plus 10y is equal to 105 because fixed charge and charge per kilometer for 10 kilometer 10y together rupees 155. Second condition, x plus 15y means fixed charge plus charges and 15 kilometer whatever charge 15y and together rupees 155. There are two equation और इन इक्वेशन को सॉल्व करिए. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10y को ट्रांसपोज कर दिए इधर एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड. 105 minus 10y plus 15y is equal to 155. 5y is equal to 155 minus 105 because 105 will come to the right side as a minus sign. 15y minus 10y will come 5y, then 5y is equal to 50, then y is equal to 50 by 5, that means 10 will come. You can see here the value of y is equal to 10. Then and put this value or put y is equal to 10 in equation first, then x plus 10 into 10 is equal to 105, then x equal to 105 into 100, 10 into 10 100 will come to the right side as a minus sign, so x equal to 5. Okay, so we can say that hence fixed charge is rupees 5 and charge per kilometer is rupees 10. तो 25 किलोमीटर के लिए चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं. सो चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, ओके, 5 plus 25 into 10, 25 into 10 250 plus 5 is equal to rupees 255.
Okay, got it? Okay. The next question number fifth part I already explained. फिफ्थ पार्ट समझ में आ गया होगा, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ओके. The last part of this exercise are this means substitution method. Sixth part. 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. Okay. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? This is sixth part. Okay. Let the age of Jacob be x years and the age of his son be y years. Okay. According to question, means after 5 years, x plus 5, the age of Jacob, and son ki age y plus 5. And who is 3 times? Jacob will be 3 times. So we have to multiply to the son side. सन की तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो दोनों इक्वल होंगे. नाउ सॉल्व इट. x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15. 3y विल कम टू द लेफ्ट साइड एंड 5 विल कम टू द राइट साइड. ट्रांसपोजिशन. x माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 15 माइनस 5. देन x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. यू कैन से दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ओके. देन सेकंड कंडीशन, 5 years ago or before 5 years, x minus 5 Jacob age, y minus 5 son age. Okay. And who is 7 times? Jacob is 7 times. Okay. So we will multiply to the son side. Okay. X minus 7 y is equal to minus 30. Finally, you can solve x minus 5 is equal to 7y minus 35. Okay. तो 5 उधर ले जाएंगे, 7y इधर आएगा. x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5. ओके. सो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. यू कैन सी हियर. देख सकते हैं ना, राइट. ओके. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 3y प्लस 10. ओके. x इधर ले आया आप. ठीक है. एंड पुट इन इक्वेशन second. So 3y plus 10 minus 7y is equal to minus 30. This minus 7y plus 3y minus 4y. And इधर minus 30 minus 10. So minus 4y is equal to minus 40 minus minus cancel. Then y is equal to 40 by 4. 4 on the 4, 10. So value of y is equal to 10. Put y is equal to 10 in equation. First, second, third in any equation. मान लीजिए आपने ये बनाया तो आप इसको थर्ड इक्वेशन भी कह सकते हैं. ओके. और यहाँ वैसे भी हमने मेंशन कर दिया y इक्वल टू 10 इन x इक्वल टू 3y प्लस 10. सो x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, दैट मीन्स x इक्वल टू 40. सो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी 40 years एंड एज ऑफ हिज सन इज 10 years old. ओके. सो what you seen in this exercise? You seen all the types of question, age and angles, fractions, numbers. इस टाइप क्वेश्चंस आपने देखे ना, तो आपको समझ में आए होंगे कैसे आपको इक्वेशन बनाने हैं और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है. क्योंकि इक्वेशन यदि बना लिए तो सोल्यूशन इनका बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. So I think it is sufficient for today. The next method, elimination method, I will explain in my next video. So thank you. Have a nice day.